Hello everyone, this is your Faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. Welcome to our YouTube channel CND courses by Rani. So I have completed my Masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have qualified my UGC NETs 2 times and I have completed my CDE courses. So in the today's topic, we will learn about the role of fat in my diets or basically in our diets. So here, most of the time fats are the culprit of our diet. However, it is not true at all because there are many more functions of the fats. So in today's topic, we will learn about the functions of the fat. So there are mainly 5 functions in our body or basically in our diet which plays by our fats. What is fat? We know very well, and fat is something that most of the time, as I told you, that not a culprit. It is basically helpful in providing us satiety, palatability, and make us more palatable by having it in diet. So without wasting time, let's start the function of the fat. The first function is the body composition. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बॉडी कॉम्पोजिशंस क्या बता रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो निर्मित करता है फैट से. सो लेट्स talk about the point number 1 that all body cells contain some fat. Ideal body composition for female is 20 to 25% and body fats in male is 16 to 90%. With aging, the proportion of the fat in the body generally increases and that's of protoplasmic tissues decreases. सो ये क्या कह रहा है? द पॉइंट नंबर 1 डील कर रहा है कि हमारे जो भी बॉडी के सेल्स है उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट है फैट्स के. सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो फीमेल में फैट का कॉम्पोजिशन होता है वो 20 से 25% होता है एंड जो मेल होते हैं उसमें जो हमारा फ़ैट का कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली बॉडी फैट जो होते हैं वो 16 to 90% होता है. एंड यहाँ पे ये जो परसेंटेज है उसमें एक बात और आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कई लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई ऑलवेज फीमेल जो है वो ओबीज होती है मेल्स के तुलने में. तो मेल की तुलना में अगर देखें तो फीमेल इसलिए मोटापा होता है बिकॉज उनकी कॉम्पोजिशन मतलब बेसिकली जो फीमेल होते हैं उनके बॉडी कॉम्पोजिशन में जो फैट है वो ज़्यादा परसेंटेज में है इन कंपैरिजन टू मैन. दैट्स वाई द दैट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है आप लोग के लिए. सो द लास्ट पॉइंट, एज होने के साथ साथ जो हमारे बॉडी के जो फैट्स हैं वो क्या होते हैं जनरली हमारा उसका प्रपोर्शन बढ़ता चला जाता है एंड समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ द वेट, है ना. सो ये हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर आता है. द नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द फैट इज़ द एनर्जी स्टोर. As we know, our body store energy for the further functions when we are in starvation conditions or when we are in fasting. So energy store points के अंदर जो points आते हैं उसकी बात करूँ, the primary function of the fat is to supply energy. Each gram of fat gives 9 kilocalorie. The high density and the low solubility of the fat make them an ideal forming which to store energy. Fat are stored in adipose tissues. And the last point, many glucose utilized are also synthesized into fat and stored. So let me tell you, जो हमारा प्राइमरी फंक्शंस होते हैं फैट का वो क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना होता है. क्योंकि हमारा 1 ग्राम जो फैट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि 1 ग्राम फैट आपको कितना किलो कैलोरी देता है. तो 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी देता है. और यहीं पे अगर हम 2 सवाल और पूछ लें कि 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी देता है एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना किलो कैलोरी देता है. तो इन केस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वी शुड रिमेंबर that 4 kilocalorie gives us by each gram of carbohydrate and protein. But in case of fat, 1 gram of fat will provide us 9 kilocalories only. So now next, the third point क्या कहता है? जो हमारे एनर्जी है वो जनरली स्टोर्ड होते हैं एंड उसके अलावे द पॉइंट नंबर 4 जो फैट होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज़ में. तो याद रखना जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ है उसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है. तो फीमेल में आपका एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. दैट्स वाई दे आर लीडिंग टू मोर वेट इन कंपैरिजन टू फीमेल.
The last point, that is many glucose utilized are also synthesized into fat. तो कई बार हम लोग बाय मिस्टेक क्या करते हैं, सोचते हैं नहीं फैट जो है वही सिर्फ वेट गेन कराएगा. नो, द कार्बोहाइड्रेट विच वी कंज्यूम इन आवर डाइट और द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, दैट ऑल्सो कन्वर्टेड टू फैट एंड stored in your adipose tissue, and that's why we lead to more weight, and further we develop many more complications or diseases. So here the point is, remember कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा रहे हैं वो भी आपके फैट में ही सिंथेसाइज हो रहा है. सो टेक केयर कि हम लोग अपने रिक्वायर्ड के क्वांटिटी के अनुसार ही लें. So next come to the third point, that is satiety function. What the satiety means? Satiety यानी आपको संतुष्टि. तो संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में. वो कहाँ से आती है? वो आती है आपके खाने में फ़ैट से. तो फैट क्या करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करता है एंड स्टमक में लंबे समय तक खाने को रोक के रखता है, क्योंकि उसको पचने में टाइम लगता है. और इस तरीके से हम लोग को भूख बार बार नहीं लगती है, हंगर सेंसेशन को डिले करता है एंड उसके चलते हम लोग को लंबे समय तक संतुष्टि फील होता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द फैट इन आवर डाइट. द पॉइंट नंबर 4, palatability. Basically, the third point tell us that we need satiety in our diet. However, we also need the fourth point, that is palatability in our diet, which means we need ruchi. Basically हमारे भोजन में रुचि होनी चाहिए and that comes from fat. So the first point, that is fat adds flavor and palatability to the diet, and if fat is eliminated from the diet, that diet become very bulky. तो फैट ही हमारे डाइट में नहीं होगा तो भोजन में रुचि नहीं आएगी, है ना. एंड फैट क्या करता है, फ्लेवर ऐड करता है, हमारे खाने में रुचि ऐड करती है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड फैट्स इन आवर डाइट, बेसिकली इन द एम्पल क्वांटिटी, बेसिकली इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी. एंड it often difficult to ingest sufficient food to meet energy requirement. समटाइम जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग फुलफ़िल करते हैं फ्रॉम द फैट, एंड विदाउट फुलफिलिंग दैट हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स we do not consume a healthy balanced diet, and that leads to deficiency or develop some kinds of malnourishment in our body. So the palatability points will clear out. Next come to the fifth point, that is insulations and padding. So the fifth point क्या कहना चाह रहा है, insulations term से आपको ये पता चल रहा हो कि ये insulation का काम करता है and it's act as a padded material. So some cutaneous layer of the fat, an effective insulator, reduces the losses of body heat in cold weather, causes an excessive layer of the substitution as in obesity. तो जो हमारे फैट होते हैं वो क्या होता है, बॉडी हीट को लॉस होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. और वो क्या करता है, उसी से फिर हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है ठंड लगने से. And the last point in insulation and padding is fat also have some value of lubricant for the gastrointestinal tract. As I told you earlier, or if not you can mention or write it down in your copy, that जो हमारे gut health है उसके लिए आपका फैट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक lubricant की तरह एक्ट करता है. एंड द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट इज़ देसी घी. देसी घी एक्ट एज अ lubricant for our gut. So it is very important to present fat in our diet. Without it the above functions cannot be fulfilled. And I hope the session was useful. Thanks for watching. Do like, share and subscribe our channel if it is helpful. And for any kind of query you can mail us on dietitianrani0651@gmail.com. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking and keep sharing. Thank you.